Still I am not clear about the difference between pure observer and natural acceptance. Yeah. Then, shall I move to the second question also, Ji? Yes, yes. The second question is about I know about a corporate guru who always dress himself in a fashionable, trendy outfits and accessories. So it may be my precondition that as a spiritual practitioner, why he's dressing like a model. That may be my precondition, G. But the question is, there are now and then there are so many allegations coming against him and his organization. So, as a common man, how can I rightly evaluate him whether he is a true spiritual practitioner and seeker? G. Yeah. So, regarding the first question, what I Mm. was explaining that day, and I'll try to explain again, Mm. that if you are at the level of pure observer, some simple, you know, signs or simple things that we can uh, check for the pure observer is that Mm. when I am at the level of pure observer, I can observe the lower activities of the self. I can also evaluate these lower activities of the self, and while observing it, I am not getting influenced by this lower activity, Mm. Mm. and I am not reacting to those lower activities. Mm. So this is some of the checks Mm. Mm. to tell me whether I am at the level of pure observer or not. G. So, in other words, we can say that when we are at the level of pure observer, number one, we have the capacity to see, to observe the lower activity, capacity to evaluate the lower activities without getting influenced by it, without any reaction. Mm. So if you are there, then you can get a feel of what really it means to be a pure observer. Mm. Mm. When you are at the level of pure observer, you are in harmony within and you are in a state of happiness within. There is no disharmony, there is no unhappiness. Mm. So this is main thing that we have to identify for ourselves. Mm. Now, when we are at the level of pure observer, from there you can ask this question: what is naturally acceptable to me? Mm. And you can get the answer from there. So your natural acceptance is some answers that you are getting regarding yourself at the level of pure observer. Mm. So when you are at the level of pure observer and you are observing your feeling, for example, you can ask this question to yourself: what is naturally acceptable to you? Feeling of relationship or feeling of opposition? What leads to harmony and happiness? Feeling of relationship or feeling of opposition? Mm. So when you are asking this question, the answer you are getting is basically from the place of pure observer. If you ask the same question from your sanskar, you might get the answer that, okay, it is comforting when I have a feeling of relationship, but in this world of opposition, if you have to survive, you have to have the feeling of opposition. Right?
That is why so many people are deciding in favor of feeling of opposition. So, natural acceptance. What is my natural acceptance? That answer comes from the pure observer. So when we are asking this question to ourselves, what is my natural acceptance? Basically, we are addressing to our pure observer. That is what we are doing. And from there, we are getting the answer. So basically, this natural acceptance is some of the answer that we are getting. So these answers regarding natural acceptance are obtained from the pure observer. Yeah. Okay, Ji. Let me explore more and Yes. see for myself, Ji. Yes. Yes. Regarding my second question, Ji. Yeah. Regarding the second question, evaluating somebody on the basis of his dress or on the basis of his appearance may not always be correct. That I agree, Ji. Right? So, he may be a right person, he may not be a right person. Both these possibilities are there. Now, the question is whether I believe on him or not. Right? How to rightly evaluate him. Yeah. Now, the question is why am I evaluating the other? Because I want to relate to the other. Ganesh, let me add. His teachings are in line with UHV proposals. So I am attracted towards his preachings. But I want to know whether he is living by it. What I'm saying. The question is basically I want to relate to the right? Whether he is relating to or not. Okay. That is the question. Is it correct? Okay. I am not able to see the relationship, but still, that may be correct, Ji. No, I am feeling that what he is saying is in line with UHV. Yes, Bhaiya. Then I am trying to ask this question to myself, whether I listen to him, whether I believe on what he is saying or not, right? That is the question. The answer is I want to. You want to? I want to know, Ganesh ji, that whether he's living by his preachings and teachings. When I'm getting allegations against him, I'm having Is a that doubt. important? Is that important? Or what is important is whether you connect to that person or not. Whether you take his words to be true or not. Whether you spend time working on it or not. That is the question, isn't it? So my response would be that I take his words to be true and I verify, explore on it and I verify for myself.
If it is right for me, I will work with it. If it is not right for me, I will drop it. Relax your neck, relax your face, keep a smile on your face. That is what we are saying in UHV, that every time you have a proposal, you have to explore. Why take it as just given? Why believe it on the basis of this, acceptance that if this person has said, it must be true. Become aware of the noises around So why go by assumption? Why not explore myself? So this person, whoever he is, XYZ, he is making some proposal. I will listen. I will verify for myself. I will explore and verify. And if I find that this is something which making sense for me, I will work with it. If I find that what he is saying is not naturally acceptable and not leading to harmony and happiness, I will drop that. Because this idea of evaluating this other person in his completeness is a fairly big task to do. Yeah, that is what, Bhaiya. Yeah. He is there with all his self and his environment. Right. So there may be certain actions of him on the basis of which you can make some evaluation. Which is fine. But I do not engage myself or my life for this purpose of evaluating the other. I will rather invest my life in trying to understand, right, the existential reality, understand myself, how I have to be with this existential reality. And I'm paying attention to him also with this expectation. So I can listen to the other and I can explore myself and see what he is saying is right or not right. So we are not going by belief anyway, we are not going by assumption. So for us, this is not an important question. Whatever he is saying, we'll explore and see. Yes. His preachings are fine. Only thing is behavior. That there is a conflict, and there I'm getting stuck up, G. I will not buy that behavior. Simple. Bhaiya, you could not be heard. I said I will not buy that behavior of him, which is not proper. Am I audible? Now we are audible, G. Yeah. Okay, thank you so much, Ganesh. Thanks a lot. Yeah. So I'm not going to go by blind faith anyway. I'm going to explore. So whatever he is saying, I'll explore myself and see. G. Yes. Okay, thank you so much, Ganesh. Thanks a lot. Thank you. Ji, we have Srinivas Gupta ji with us. Namaste, Srinivas Gupta ji. Namaste, Bhaiya. Namaste, Ganesh Bhaiya. Namaste to all my co-explorers. Namaste. Bhaiya, I would like to have small clarification regarding
this knowing and understanding part is concerned, is it to maintain continuous happiness, to have a continuous happiness and harmony within self? We need to know and understand about self and the relationship between among the existing relationship among the units in the nature, including human beings, and is that enough, or any subject matter of discussion also need to be known very well and understand? That means what I mean to say is it some balance required between the skill-based the development and this knowing about this self-body coexistence and existing relationship and harmony in the nature and everything? Yeah. So this is important question. We have been talking about this complementarity of values and skills. If you remember, right? Yes, yes, yes. Right in the initial chapters, we have talked about the complementarity between the values and the skills. Yes. And we said both are important. Yes. And they are complementary to each other. Yes. So let me explain what it means. So what it means is that we as human beings have two major responsibilities. Right? Yes. Yes. One is to understand what to do. Right? Yes. And second is to understand how to do. Yes. So this question regarding what to do is related to the value education. And question about how to do is related to the skill education. Okay. Yes. Unfortunately, what is happening today is that we are talking about skill education without talking about the value education. So we do not have the clarity about what to do. Right? And Yes. we are busy with developing skills to do things. Yes. For example, if I have to learn the skill of making a bomb, atom bomb, right? Do I need to ask this question whether I need to make a bomb, whether I need to fight, have this feeling of opposition, or ultimately I have to work for relationship? And if there is a condition when the other person is going to violate me, then to avoid that condition, I might decide to make a atom bomb for the time being. But this is not the solution. Do I have this clarity? What do you think? Today, do we have this clarity? No. That is the reason all these conflicts and struggles. Yeah. So America keeps claiming that we can destroy this world 30 times. We have so much of weapon. Now this sounds very foolish because you can't destroy an earth 30 times. You can destroy only once. So if we have enough weapons to destroy it once, fine. Why more? Why 30 times? But because we don't have that clarity of what to do, and we are busy with how to do. So even if we have wrong assumptions about what to do, we are busy developing the techniques, the skills. So what we are saying is that we should have the clarity of what to do. Necessary skill
of how to do. So all these questions about understanding oneself, understanding the existence, understanding our role in the existence, right? This put together is basically trying to get the answer about what I have to do as a human being in this existence. Yes. And that is what we are calling as value education. Once we have the answer of what to do, what I have to do as a human being in this existence, then I will work out the necessary skills which are required for doing what I have to do. And if I do not have those skills, I will learn those skills. Is that clear? Yes, but one small clarification required is sometimes what I have observed, people know what to do, but they are that is not leading to how to do what. They satisfy with what to do by knowing. That is also a problem, I think. Am I correct? Yeah. No, if that problem is there, then these people have to overcome that problem. Because Yeah, if that you is. know what to do, if you know what to do, you will certainly do something about it. Yes. And in order to do something about it, you will learn the necessary skills. Yes. 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 So if somebody is not doing, that means he has some lack of clarity in what to do itself. Yes. Yeah. Yeah. Because if you understand that there is relationship, you will also understand that the relationship has to be fulfilled. Yeah. Yeah. Correct. That is lack of understanding. For example, for so many days you are trying into this, exploring into this value education thing, right? Yes. Yes. And you are able to see that you have this feeling of relationship naturally acceptable to you. Yes. And therefore, there is some increase in the feeling of relationship in you. And that Yes. makes you more comfortable and harmonious and happy. Now, when you have that feeling, are you doing anything to fulfill that feeling of relationship Yes. 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 or not doing anything? Yeah. Always try to make that part fulfillment of relation when I interact with anybody and any situation or anything. Yeah, so that is very natural. Yes. If that is not happening in someone, then it is a matter of concern. He needs some help. Yes. There is some lack of clarity in the other. Yes. Yes. Yeah. Now I could get understanding. Very nice explanation. Thank you, Vaya. Yes, thank you. Thank you, Srinivasi. Thank you, Vaya. Thank you very much. Thank you. Yes, Rajesh. Namaste. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है. हाँ जी, प्रणाम सर. प्रणाम, My प्रणाम. missus Jagruti want to just talk with you. प्रणाम सर. जी, सर आपको मिलना चाहती हूँ जी, कानपुर. नमस्ते. आप जब पुनः आएंगे तो घर पे आ जाइए ना सर प्लीज. मैं आऊंगा, पुणे आने का है मुझे अगस्त में किसी समय. हाँ मैंने सर. बताया था राजू जी को मैं आऊंगा. अच्छा सर. और अच्छी बात है, आप लोग तो देहू में रहते हैं. हाँ सर. तो और यहाँ पे बताया तुकाराम है. महाराज का बहुत बड़ा प्रस्थान है. यहाँ पे पालकी सोला होता है, बीज का सोला होता है, सोला होता है यहाँ पे. ये सब चलता है सर यहाँ पे. बिल्कुल प्रणाम भैया. बिल्कुल, इन्होंने बताया था हमको. थैंक यू. हाँ हाँ सर. तो कहा थे कि जब मैं पुणे आऊंगा तो ऐसे भी देहू हम लोग को जाना था.
Sir, I नहीं yes, जा sir, I पाए welcome, sir. Welcome, पाएंगे। sir. Thank you, sir. Thank you. जी 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 न जी प्रणाम सर। मेरा कोई प्रणाम क्वेश्चन प्रणाम। नहीं है, मैं एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, खुद एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, दूसरों तक इसको पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जी जी हाथों को जी पीछे प्रणाम। शोल्डर ब्लेड पे, गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पे मुस्कान, एक साधारण सांस लें जी सूर्यकांत भैया नमस्ते। और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, नमस्ते भैया, नमस्ते गणेश सर जी। नमस्ते Am I श्रीकांत audible? जी। यस यू आर ऑडिबल। breathe out, Uh, 2, sir ji, 3, yesterday there was a 4, incident. 5, There was a 6, thief came hold, behind our house 3, and he caught some 2-3 4, mobiles and he hold, left. On the way he has been caught and people have breathe beaten him. out, 2, 3, And 4, this is not the first time he is doing in our colony. 5, It is the second 6, time. The first time he hold, has been sent to the 2, jail also. breathe in, 2, And my question 3, here is, Bhaiya, 4, that's what hold, must be 2, the response of a paper 3, observer at 4, such an breathe instant? out, That is the 2, first question. 3, And second 4, question is, 5, what 6, is that hold, 2, in spite of breathe doing so many in, things 2, and 3, 4, even going to jail hold, also, even he as a 2, self having 3, to be happy all the time, 4, breathe why out, the change is 2, not happening with him? 3, 4, These are the two questions, Bhaiya. hold, 2, breathe in, 2, 3, 4, See, if I look at this whole hold, phenomena, 2, I feel that he has this problem because he has not been given the right education and sanskar by the parents, in, by the 2, environment, by the society, by the schools and colleges. 3, 4, hold, That is the real 2, problem. 3, 4, breathe And out, unfortunately, when he is taken to 2, jail and put there, 4, 5, confined, 6, even in the hold, jail, we are not 2 giving and the right relax, education विश्राम and sanskar. करें. This is the problem. So, from the pure observer, if you see, this will be the answer that I, as an individual, and finally I, as a society, would like to work for ensuring right education and sanskar at home by the parents, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए by the environment, by the whole society, तैयार हो by जाए the शरीर को schools and छोटी colleges. And if somebody has not been able to get this right education, despite all this effort, लंबी गहरी and सांस he is लें creating, और जाने committing दें. some kind of एक crime, और लंबी गहरी then सांस we'll लें put him in the और jail. खाली कर दें. And in the अब पूरी jail, जोश के that's very साथ good in, place where 1, you have 24 hours in, time. 2, You are in, anyway provided 3, for food and everything, in, shelter. 4, So there in, we should give right 5, education and sanskar. in, 6, If we in, do 7, that, things in, will fall in 8, place. in, 9, Because as a in, human being, 10, every one of us in, wants to 11, understand what is in, right and do what 12, is right. So that is in, what makes us 13, happy. in, 14, in, 15, in, 16, So in, that will be 17, my in, 18, response in, 19, to such people. in, 20 And and relax विश्राम करें. interestingly, we have जिन्होंने tried एडवांस working कोर्स with the कर लिया jail वो बंद करा inmates सकते हैं. many places. Apply the And our norms. experience is that they are the people who respond faster than the people in these colleges and schools because they have already gone through the effect of not having right understanding and right feeling and right thought. And they have enough time to Get experiment. ready for second round of Bhastrika. So we should give right education and sanskar in the Take a schools and normal deep colleges and breath in the in society and in the family. and let And go.
We should also give Another right deep breath education and in sanskar in the jails. and let go. Jails and all Now such together. confinements. In 1, in 2, in 3, in Yes, It yes, is very very 4, true. effective. in 5, Yeah. in Yeah, very true, 6, Bhaiya. Mostly, I think in 7, that in experimentation is not 8, going on in all the in jails 9, and in every part of the 10, society, what I feel, Bhaiya. in 11, Yes. in So we 12, have to work for it. in 30, in Interestingly, 40, I remember we did in this work with 50, Bilaspur Central in Jails 60, for in 2 years, 70, in and we 80, did lot of in kind of 90, in recording of their 20 feedback and and the relax study विश्राम of that. करें मन And लगा सकते हैं like we asked them, what do you think the whole day? What is your thought? And then we started working with around 150 people there. शरीर में हो Ultimately, रही we worked ऊर्जा with के around संचार को 650 people, महसूस but करें 150 people we were working feel the with, flow of and energy we in your made this body survey of what they think the whole day. And in the beginning, most of them said that we भस्त्रिका की keep आखिरी thinking राउंड के of लिए तैयार हो जाएं the people because of whom चेहरे पे we are मुस्कान inside this jail. रखें And we एक keep planning साधारण how लंबी to गहरी take सांस revenge from these लें people. और जाने दें So this is the major एक और thought लंबी process. गहरी सांस लें और Then खाली कर दें we ask them the same अब question पूरे after जोश 6 के months. साथ इन 1 Most of in them said that 2, now we realize that we in committed some mistake. 3, These other people in also committed some 4, mistake. in We are 5, fortunate, in to get 6, this in input, 7, and we are working in on it, and we are 8, feeling more comfortable. in 9, And now we think that when we in go out, 10, right, we will in try to 11, help these in people because 12, of whom we are in the in jail, because 30, they are in also 40, in in trouble. 50, in So 60, this kind of change in was quite 70, visible. in 80, Recently, we had this in 90, experiment we have started in in Kanpur, 20 and relax and विश्राम one of the करें inmate, he said that मन I लगा सकते am हैं inside the jail by chance और जो लोग वज्रासन because में I have हैं been trapped धीरे by से some वज्रासन से निकल uh, सकते हैं police आंखें this बंदी thing, रखेंगे station in charge, SI, पैरों को फैला सकते and I हैं am मल sit here, सकते but हैं my case is under consideration in the court, and very soon I will be free. But I am very now I feel very obliged to this station inspector who brought me here, and I got this, you know, right proposal. And then after some time he was released because his case was not very strong and this fellow was doing some garbage. So this man went to that SI after he was freed from the jail with a packet of sweet, gave him lot of thanks that you had put me there, okay, and it gave me this opportunity to get the right kind of proposals on which I am working, and it is making so much of change in my life. He rang up from there to us saying that I want you to talk to this SI. And this SI was also quite surprised, that this kind of things can also happen because he had manipulated to put him into the jail. So all these bad people are not so bad people. Yes, very true, Bhaiya, very true. So you should start this work in the jails of your area. I feel that every college should take the responsibility of at least one jail around them to help them give the right kind of education and sanskar. And not very difficult, even if you do it for
10 days in the evening, 3, 4, then hold, once in a week, 2, it can make a 3, lot of difference. 4, breathe out, 2, 3, So every college 4, should take the 5, responsibility. 6, hold, Yes, yes, Bhaiya. 2, Thank you, Bhaiya. It is in, very helpful. I think 2, the society 3, transformation will happen 4, if every hold, institute 2, participate like this. 3, Yes. 4, breathe Yeah. out, 2, Thank you, In 3, Bhaiya. Ghaziabad, there is a 4, college called 5, AKG, 6, Ajay Yes. Kumar Garg hold, College of Engineering. 2, They breathe are already in, doing it with 2, one of the jail in 3, Ghaziabad. 4, hold, 2, So like that we 3, can do. 4, breathe out, 2, 3, Yes. 4, 5, 6, Yes. hold, Thank you, Bhaiya. Thank you 2, very much. That's what one has to in, start, Bhaiya. 2, 3, Yes. 4, Yes. hold, Namaste, namaste, 2, Bhaiya. Namaste. Thank you 3, very much. 4, breathe out, 2, 3, Namaste. 4, Namaste. 5, 6, hold, Namaste, 2, Ganeshi. breathe in, Ganeshi, I just want 2, to know from the 3, exercise too, 4, about hold, pain. 2, So I was 3, experiencing pain 4, in my neck. breathe out, Never in my 2, life before 3, any pain used 4, to give me so much 5, suffering. 6, Even I hold, started 2 crying, and Bhaiya. relax. So you विश्राम have once करें told, you had अकेले once told, जागोते आसमान even की when you खुली sit with हुई like cross-legged for 1 hour, initially you will feel pain, and then afterwards you will not feel that uh, pain. Later on it will go off. So I was trying to explore these also when my pain was happening, but it was not Yes. शरीर में doing. नाभि संवेदनाएं It हो was रही हैं, not. उनके प्रति सजग I don't रहें know whether I tried to give that separation to the pain, but still Get it ready for was second stage disturbing of me a lot. pranayam. Thumbs under your armpit, elbows So straight. how Yes. is it possible A that we gentle can, smile on your with the face. exercise too, चेहरे पे we हल्की सी can मुस्कान separate the रखें. pain from the, of course the pain is from the Take a body. normal deep breath I think myself in was getting and disturbed, let and then go. with this exercise too was also Another going on. deep breath So I tried to in explore that I should not and get let disturbed. go. The Now pain is something energetic. different. Breathe in, So 2, somewhat I put 3, the self, I 4, tried not to hold, disturb. 2, But this was first 3, time I really 4, cried also out of breathe the pain, out, which had never 2, happened. 3, So 4, that was, 5, I just want 6, to. hold, 2, breathe Yeah. in, 2, This is an 3, a very 4, interesting experiment. hold, 2, 3, So 4, what we have to breathe do is out, when 2, some pain is 3, taking place in the 4, body and 5, I am 6, observing that pain, hold, 2, breathe in, then the core 2, thing is that I am 3, observing the pain 4, without reaction. hold, 2, 3, 4, breathe What happens out, generally is that 2, when I am 3, observing the 4, pain 5, and that 6, pain hold, is 2, breathe in, something which for 2, which I have a very 3, typical, 4, hold, reaction, 2, typical sanskar, 3, then I start 4, reacting. breathe out, I want to 2, remove that pain. 3, 4, 5, 6, So I hold, want to remove that 2, pain and that pain is not going. 2, 3, 4, hold, 2, So 3, I am observing, 4, breathe out, but 2, deep inside, 3, 4, I want that 5, pain to 6, go. So that hold, reaction is 2, already on. breathe in, And because the 2, reaction is already 3, on, my 4, unhappiness is already hold, on. 2, 3, 4, breathe out, So what 2, was said 3, that when 4, such a thing is 5, happening, 6, hold, there is some 2, sensation breathe in, and I do not like 2, that sensation 3, and I am 4, reacting to that sensation hold, 2, and I am 3, 4, unhappy, breathe out, right? 2, 3, What we can 4, start doing 5, is that 6, observe 4, that pain 2, without reaction. breathe in, 2, 3, That is the crux. 4, Observing it hold, without reaction. 2, 3, 4, breathe out, If you start 2, reacting, then 3, things will become 4, complicated. 5, 6, So that is what we 4, have been doing till 2 now. and relax. विश्राम करें. So observing it अकेले आप without जागोते हैं. reaction means you are observing from the
place of the pure observer, right? When you observe without reaction, then it might happen that the pain gets aggravated. Because there is some process going on in the body, and because of that process, the pain is getting aggravated. When it starts getting aggravated, I start reacting. So that is not what it is being suggested. What is being suggested is that fine, let it increase. Okay. And you observe without reaction. That without reaction is very significant. So now if you observe it without reaction, what will happen? Basically that process which is taking place in the body will get completed. And with that sensation will go. Because that sensation is an information or an indication of the process which is going on in the body. And that process is what we are observing as sensation. Isn't it? So it is interesting. It is interesting to observe this a few times. But if this pain is becoming or sensation is becoming very acute and you have started reacting to it, then you can stop the process for the time being. Don't insist on it. So the issue is not that, I have taken a vow and I will not, do anything for that pain. If I find that I'm not able to handle it right now and I have started reacting, then you stop the process of observing for the time being. Do whatever you have to do for the pain. But next time start with a simpler case. But if you are able to see it once, that there is some process going on in the body and I am getting some information about that process going on in the body in the form of sensation, and I don't have to react to it. And I see that and I don't react to it. And that process gets completed and the sensation gets over without my reaction. Then it's a big revelation. Next time, any such small sensation will not disturb me, which it keeps disturbing today. Yeah, but before small pains used to come, so I used to do the same thing. It used to go by itself. But this, I think I was reacting, what you mentioned. Reaction was going on, I see that. Yeah. So in that case, you can drop it for the time being. And then try again with simpler state. Okay, Bhaiya, thank you. जी नमस्ते जी नमस्ते भैया जी there are a few more hands raised, but it is time for the Hindi session, so they can ask their questions maybe in Hindi. In Hindi. So we'll switch out the Hindi. Before that, you can see some message in the chat box. So tomorrow onwards, we are going to start the sharing with the senior co-explorers, and then 28th onwards, the new participants of the new batch. So you can give your name as for your convenience, and the schedule is available in the chat box. So you can look at the schedule wherever the slots are available. Please give your name. So we'll switch over to Hindi. Namaste, Niti Didi for the moderation part. Didi, over to you. Thank you. Thank you so much, Sunil Bhaiya, and all participants for helping us. And Ganesh sir, अभी हम हिंदी सत्र की शुरुआत करते हैं. नमस्ते गणेश सर, प्रणाम. नमस्ते नमस्ते. नमस्ते गणेश जी. जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते.
जी निधि जी आप सभी का स्वागत है। गणेश जी आज हमारे साथ हैं। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं, अब एक्सरसाइज 1 और 2 अभ्यास 1 और 2 खत्म हो गया, उसका समाप्ति कल हो गया था। तो उससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं आप रख सकते हैं। गणेश जी हैं आज, तो निधि जी आप क्वेश्चंस मॉडरेट करेंगे। जी जी गणेश जी हम लोग स्टार्ट क्या कर कह रहे हैं आप? सकते हैं। नहीं हाँ लेने जी, का हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, हाँ जी। एडिलेट जी हैं। जी एडलेट जी बताइए। नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। एडलेट जी आवाज नहीं आ रही है। Namaste, Ganesh ji. Am I audible? नमस्ते, नमस्ते। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। अब आवाज आ रही। Can I ask in English? या Uh, Ganesh ji, you told about the prisoners being introduced to UHV. Now, I have a now I have an opportunity to visit people in the hospital. When people become either terminally ill or when they are disabled for some time, or they have illness which is little unbearable, all those cases. How do I talk to them? Because I feel I am at one level, I am well, they are not. So when I talk to them, I may not be empathizing with them. I may be advising. It can look like. So how do you talk in the hospital to people? Yeah, it is very important because for the people who go by the assumption that they are the body, for them, if they come to a situation where they find that this body is anyway going to terminate, then they are really in trouble because they can't see what to do now, because they are the body and the physical condition of the body is such, the health condition of the body is such that nothing much can be done and it will not be there anymore. So very difficult. I mean, one doesn't know what to think, what to do. Right. So one thing is that their body is not healthy. Other is problem is, and more than that, main problem is that the self is totally confused now. So if we can provide them this help to explore and see for themselves that they are not just the body, but they are the coexistence of self and the body. And it is the self which is associating itself with this body and trying to do certain things through the body. And
It is the self which has the responsibility to keep the body in good health, to rightly utilize the body. So all those three things, the nurturing of the body, protection of the body, and right utilization of the body is the responsibility of the self. And as an instrument, it's its responsibility. Number one. Number two, it is the purpose of the self for which the body is used as an instrument. So as long as it serves the purpose of the self, right, it is worth working with. And if its health has gone down or is going down and nothing can be done about the health of this body, then I may decide to part away with it. And so many bodies are being formed in the womb of the mother, right? So I can associate with some other body. So if this clarity comes to them, then at least at the level of self, they will not be confused. They will have the clarity that, right, this is an useful instrument for me, this body. I have used this body rightly or wrongly. Okay. But this body is going to die. I am not going to die. That one assurance is there. Second, with this clarity, they will realize the responsibility of the self towards the body. And if they can realize this responsibility of the self towards the body, they will become more responsible towards the body. In fact, many people have come to the of termination because they have not been responsible towards the body. So if they become responsible towards the body, there is a possibility that many of them will come out of this problem of terminating illness. But even if they are not able to come out, they are able to see that, okay, it is me, this self, who has been acting with this body and making some use of this body. Now that it is not any more useful and it cannot recover despite all my effort, then okay, whenever necessary I will part away from it and I can associate with some other body. So many bodies are in the process of formation. So there is not much to worry. There is not much to get confused. I will be able to take decision how to take care of my health of the body, and if I am not able to take care of it at all, then I'll decide part away. Today what is happening is that, number one, they do not know what to think and what to do. They are totally confused. Number two, they are not even able to decide to part away from the body. So they are hanging around, making themselves unhappy, and they make the whole family in trouble. Right? The whole family does not know what to do. They spend all their resources and money to recover, and it doesn't work. The whole family is suffering. So all those things can be solved. So what should we do? We should make this, help them to understand that they are not just the body, but they are the coexistence of the self and body. And interestingly, you try doing this with some, of the patient with terminating illness, and you will find that it works, and it works very fast. I remember we were conducting a workshop in a place called Meghnagar. There is a hospital called Jeevan Jyoti Hospital.
This workshop was run by the government administration for their and the staff. And it was run in a place, this called Jeevan Jyoti Hospital in Jhabua in Madhya Pradesh. And this who was heading that hospital, he came to attend one of these workshops, and he sat through the workshop, and he at the end of the workshop he said, now I realize, what was the problem that we were facing. The problem they were facing was that these Adivasis come for the treatment, they are in a bad shape, and they give extensive treatment for few months, and they recover, they go back, after a year or so they are back again. So he said, now I realized that we were making their body healthy, but we were not making their self responsible. So they will go back, eat all kind of thing, drink lot of liquor, spoil their health and come back again. So he did lot of experiment in his hospital. He said, we'll conduct workshop for all the hospital inmates. So whoever is there for more than a week, we will conduct this session for them. So interesting results. This was long back, 1996, 97. But we can do this. We can do this with this terminating illness patient. We can also do it for the patients, who keep coming back to the hospital. Yeah, this is what I think about your question, Adelaide ji. Thank you. He should adopt one hospital and work with it and make a proper study. It is effective. We have tried with some of them and it is very effective. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Adelaide ji. Thank you very much. जी, वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी बताइए। नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। आज जो बात चल रही थी वो कैदियों के बारे में और जेल के बारे में, तो मुझे उसमें कुछ थियरीज याद आई, जैसे कि मैंने एमए किया है क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो हमको उसमें लोग अपराध क्यों करते हैं इसकी 12 अलग अलग थियरी पढ़ाई जाती थी क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र। और फिर हमारे जो प्रोजेक्ट थे उसमें तो हम एक्चुअली वहां पर जाते थे। फर्स्ट ईयर में जैसे प्रोजेक्ट था चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम, तो वहां पर जो बच्चों की जेल होती है, जेल क्या, इट इज मोर और लेस लाइक ए स्कूल। तो उसमें जैसे कुछ अंडर ट्रायल होते हैं, कुछ ऐसे जो अपराधी बच्चे हैं, मतलब पेटी ऑफेंसेस करके। तो जो अनाथ है, जो घर से भाग गए हैं, ऐसे बच्चों को वहां पे रखते थे। फिर जो दूसरा है कि अंडर ट्रायल है, जैसे रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचते हुए कुछ पकड़े गए, ऐसे बच्चों को वहां रखते हैं। फिर हमारे गेट पास बने हुए थे, तो वो दिखाते थे जो जेल का सुपरिंटेंडेंट का गेट पास, और जाके वो बच्चों के इंटरव्यू वगैरह लेते थे और उस पर थीसिस हम फर्स्ट ईयर में लिखते थे। सेकंड ईयर में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भिक्षावृत्ति से था। अब भिक्षावृत्ति में जैसे कि जो अपराध करवाते हैं या अलग क्राइम से भी रिलेटेड होता है कि छोटे बच्चों को पकड़ो, किडनैप करो, फिर उनको अपाहिज बना के उनसे भीख मंगवाओ, इस तरह के जो गैंग्स वगैरह चलते हैं। तो बेगरी पर हमने थीसिस लिखा था, जिसमें तरह तरह के वो जो अपराध, ये भिक्षावृत्ति होता है, जिसमें रिलीजियस बेगरी, हैंडीकैप्ड बेगरी, फोर्स बेगरी, इंटरनेट बेगरी और ये सब अलग अलग तरह का करके 50 भिखारियों के इंटरव्यू लेके कि आप अपराध क्यों करते हो, और ये सब चीजें मैंने पढ़ा था। लेकिन उसमें कहीं पर भी वो 12 थियरी में मुझे
सॉल्यूशन नहीं मिला। कि थियरी में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो पढ़ा देते हैं, और ये कहा जाता है कि क्रिमिनोलॉजी का एम है कि टू रिड्यूस द क्राइम्स इन द सोसाइटी, लेकिन वो सॉल्यूशन मुझे यूएचवी में मिला। कि हम देखते हैं कि अपराधी जो है वो ऐसा नहीं कि जेल में ही रहते हैं, हमारे आसपास भी जो लोग रहते हैं, कुछ लोग अपराध करते हैं, कुछ लोग अपराध करने की सोचते हैं। तो मैं तो उसमें ये करता हूँ कि बीइंग ए सोशल साइंटिस्ट या एज ए क्रिमिनल लॉयर, हमको ये भी करना है कि अपराध को कम करना है समाज में। तो जो भी लोग सुबह से शाम तक हमसे मिलते हैं, तो मेरा बस यही कार्यक्रम रहता है अब, कि जहां पर हम किसी का कॉम्पिटेंस बढ़ा सकते हैं तो उनकी योग्यता हम बढ़ाए, ताकि वो अपराध में उनकी वृत्ति ना हो। और हम यदि किसी से सीख सकते हैं तो उनसे हम सीखे। तो ये शुरू शुरू से लेके मतलब सुबह से लेके शाम तक जितने भी लोगों से मिलते हैं, तो ये कार्यक्रम के मुताबिक मैं चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि जेल के अंदर तो हम चाहे जाए या ना जाए, उनके लिए भी कार्यक्रम की आवश्यकता तो है ही, लेकिन समाज के अंदर भी जो अपराधी है या जो, क्योंकि कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है इंडिया में, 6% जो है कन्विक्शन रेट है सजा की दर, तो 94% क्रिमिनल्स आर रोमिंग फ्री इन द सोसाइटी। तो पुलिस मैनुअल, जेल मैनुअल पढ़ के भी जो सॉल्यूशन हमको उसमें नहीं मिला, वो मुझे यूएच में मिला, कि समाज में रहते हुए हम अपराध कैसे कम कर सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि जो शिक्षा है, बीइंग ए टीचर्स, हमारा ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स है, उसमें जो क्रिमिनल टेंडेंसी या क्रिमिनल प्रोपेंसिटी वगैरह होती है, मैं तो ये सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ, आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, लेकिन इसको कम कैसे करना, ये सॉल्यूशन मुझे यूएचवी से मिला। और इसे जो मूल्य शिक्षा है, तब तो मुझे वो पढ़ाने का भी मौका मिला है। और अगले सेमेस्टर से मैं 2 या 3 ब्रांच को अपनी कॉलेज में पहली बार UHV 2 थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। इसमें मुझे ये कहना है ठक्कर जी कि हाँ जी, हम लोगों को ना सिस्टमेटिक जो है प्रयास करना चाहिए, इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए जी। क्योंकि जो आपने बात कही ना, कि आज के दिन क्या हो गया है कि हमारे पास जो थ्योरीज हैं, they describe the problem, हाँ they do not have the solution. यस, और वेस्टर्न थियरी है ज्यादातर। हाँ, तो अब क्या है कि हमको अगर कुछ सॉल्यूशन देना है तो हमको ये भी काम करना पड़ेगा कि हम उसके लिए प्रॉपर स्टडी करें और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करें, है ना, डॉक्यूमेंट करें कि भाई ये ऐसा करने से इसका सॉल्यूशन निकलता है। इट इज नॉट जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रॉब्लम। जी सर। तो उसको अगर करेंगे ना, किसी भी एक जेल या किसी भी एक नंबर ऑफ अपराधी के साथ वुमन प्रोटेक्शन होम, यस, कई जगह पर उसमें होता था जो स्पेशल, ये जो अलग अलग तरह की जो जेल होती है, तो उसमें पूरे क्लास में सबको ऐसे प्रोजेक्ट बांट दिए गए थे, और उसमें फिर वो जाके अपना थीसिस लिखते थे। तो उसमें सब लोग अपना रिसर्च करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, क्योंकि ये बड़ा रेयर स्पेशलाइजेशन है एमए कोर्स में। पूरे भारत में मेरे ख्याल से उस वक्त सिर्फ 6 जगह पर ये चीजें पढ़ाई जाती थी। तो ये अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र जो है, जनरली जो पुलिस वाले, क्रिमिनल, या जो लॉयर्स, या फिर जो जजेस है, या जो सोशल वर्क करने वाले, या जिनको एनजीओ वगैरह खोलना है, तो ऐसे लोग जनरली इस तरह की पढ़ाई करते हैं। तो मुझे लगता है उनको भी ये जो यूएचवी जो है, उससे हमारा जो वैल्यू एजुकेशन के आगे बढ़कर जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे की तरफ हमको जाना है, कि क्या करना है, वो मतलब वैल्यूज शुड गाइड द स्किल्स, वो तरीके से यदि हम करें तो फिर हम वैल्यू बेस्ड लिविंग की तरफ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो आपका क्रिमिनल लॉ पर है? हाँ जी। एक्सपेरिमेंट्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके, क्योंकि क्या है, लोग तो कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, बट जो उपाय अवेलेबल हैं वो सॉल्यूशन देते नहीं है, जो आपने कहा। हाँ, यस। तो हमको इन सब चीजों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके, रिसर्च करके एक थ्योरी की तरह प्लेस कर देना चाहिए, ताकि लोग अपने लिए सॉल्यूशन इससे ले सके। यस, बिल्कुल। तो इस पर विचार करिए। बिल्कुल, हाँ, यस जी, धन्यवाद। नमस्ते। अनुपमा मिश्रा दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते।
की आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, नमस्ते गणेश सर। सर, एक प्रश्न था, मैं व्यवहारिकता से है रिलेटेड। जब से मैं यूएचवी कई मैंने कोर्सेज किए हैं, मॉर्निंग सेशन से मैं जुड़ी हूँ, तो मैं पहले से ही थोड़ा संवेदनशील थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं और भी ज्यादा संवेदनशील हो गई हूँ। लोगों की जो समस्याएं हैं मेरे घर में, मेरे अगल बगल, वो मुझे बहुत ज्यादा विचलित कर देती हैं। हालांकि ये समझ में आता है कि उनकी अपनी संस्कारों की यात्राएं हैं, प्रस्ताव के तौर पे कंटेंट उनके सामने रखती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार लोग समझने में, मतलब उस हिसाब से उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। वो चीज मुझे काफी विचलित कर देती है। वो समझने को तैयार नहीं है, उनके तकलीफ से मुझे बहुत तकलीफ होती है। मतलब इट इज लाइक जैसे कि वो मेरा ही अपना दर्द हो, मुझे इतना ज्यादा वो हर्ट करता है बाकी लोगों का। तो इसका क्या सलूशन है? मतलब इसके लिए मैं ऐसा क्या करूं कि इस तरह से मैं परेशान हूं? क्योंकि मुझे लगता है अति संवेदनशील हो गई, शायद ये इसकी समस्या हो गई है, या क्या इस तरह से है? जी सर, ये मेरा प्रश्न था। कि दूसरे के साथ संबंध को देख पाना, स्वीकार पाना, ये तो आवश्यक चीज है, और उससे हमारे में जो है हमको आराम मिलता है, हम अपने में हार्मनी में रहते हैं, सुखी रहते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि संबंध के तहत जो जिम्मेदारी हमको महसूस होती है कि दूसरे अगर तकलीफ में है, पीड़ा में है, उनकी तकलीफ के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करें, तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन जब हम किसी की तकलीफ दूर करने जा रहे हैं तो हमको उसका प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम में से हर व्यक्ति का अपना कुछ मान्यता है, कुछ संस्कार है। उस संस्कार के साथ हम अपने को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, परस्परता को देखते हैं, उसके साथ अपना भाव विचार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये सारा प्रोसेस हो रहा है हमारे अंदर भी हो रहा है, दूसरे के अंदर भी हो रहा है। उसको समझना जरूरी है। और उस प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है जिसके कारण वो दुखी हो रहा है, क्या कर रही है? ये हमको समझना जरूरी है। तो ये सारे प्रोसेस को जब हम समझेंगे तो हम तय कर पाएंगे कि हम उसके लिए क्या करें। तो संबंध का भाव है, संबंध के भाव के तहत जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के तहत समझना जरूरी है। उसको समझकर फिर हम तय कर पाते हैं कि भाई जो उसमें किया जाना है और हमारी जो योग्यता है और उसकी जो दूसरे की जो स्थिति है, इन सब के योगफल में क्या कर रहे हैं, कैसे करें, तब तो हम कुछ मीनिंगफुली कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि दूसरे के दुख को देखकर हम प्रभावित हो जाएं, भावुक हो जाएं, है ना, और उसके कारण हमारा ही भाव अनस्टेबल हो जाए और हम दुखी हो जाएं, तो ये प्रतिक्रिया है, ये रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप प्रतिक्रिया में आ जा रही हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। हमको रिस्पॉन्ड करना है। जो बात अभी एडेट जी ने पूछी थी ना कि कोई टर्मिनेटिंग इलनेस की जगह पर पहुंच गया, अभी क्या करेंगे? अभी बहुत बार तो हम उससे सेंसिटाइज होकर रोने लगते हैं, से तो कुछ निकलता नहीं। उसको हम हेल्प करें, क्या हेल्प करें, तो उसके बारे में कुछ चर्चा हम लोगों ने की, वो हम कर सकते हैं अगर ठीक से आप ध्यान देंगे ना। तो इन टर्मिनेटिंग इलनेस वाले पेशेंट को आप बहुत कुछ हेल्प करते हैं। जो भी प्रयोग हम लोगों ने किया उससे पता लगा कि दो चीज होती है, या तो रिकवर कर जाते हैं या नहीं रिकवर करने की स्थिति होती है, तो ज्यादा ग्रेसफुली शरीर को छोड़ पाते और खाली कर दें। जी सर।
अब उज्जैन में तो अब आपको अपनी जो फीलिंग है रिलेशनशिप की उसको स्टेबलाइज करना है। अभी वो डिस्टेबलाइज हो जा रहा है, वो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स नहीं है। 2 3 4 तो आप 5 अपने भाव को स्थिर 6 करें, अपने व्यवहार को स्थिर करें। आपके भाव और व्यवहार के स्थिर होने से दूसरा जो आश्वस्ति महसूस करेगा, 3 उसके 4 तहत वो आपसे धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू करेगा। 3 उसका 4 आप जिम्मेदारी से breathe उत्तर दें, out उसके 2 ध्यान में आएगा, वो अपने में एक्सप्लोर 3 करेगा, तो धीरे धीरे 4 उसके जीने की क्वालिटी 5 इंप्रूव होगी। 6 hold जी 2 सर। breathe in 2 3 जी सर, धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जी रंगनाथ जी नमस्ते। 3 आपसे चेन्नई में भेंट हुई थी। 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 ठीक, चंद्रशेखर जी नमस्ते। 4 hold 2 3 4 breathe out 2 शेखर जी की भी आवाज नहीं आ रही है, रंगनाथ जी की भी आवाज नहीं आ रही है। 4 5 6 hold 2 breathe in 2 ठीक, नरेश कुमार जी को सुनते हैं। 4 नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। 3 4 सभी को नमस्कार। नमस्ते सर, मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं यूएचवी थर्ड काफी टाइम से वो अटेंड कर रहा हूँ। पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो 4 महीने बड़ी तेजी से पता ही नहीं पड़ता, एकदम चले जाते हैं। सही बात। पहले बहुत टाइम लगता था। सही बात। और दूसरा सर, एक चीज और ऑब्जर्व करी मैंने, आजकल मैं पंचकुला हूँ, चंडीगढ़ के पास में। हाँ जी। यहाँ पे सर एक कसौली जगह है, 1 घंटे का रास्ता, 1-1.25 घंटे का, शिमला जाने वाली रोड से लेके कसौली तक, जबकि सर कसौली में कुछ नहीं है, होटल ही होटल बने हुए हैं। लोगों के पास में इतनी फिजिकल फैसिलिटी हो गई है, केवल वहाँ होटलों में रुकने के लिए, दारू पीने के लिए और दूसरे काम जो मैं नाम नहीं लेना चाहता उसके लिए आ रहे हैं केवल। वहाँ कोई चीज देखने लायक नहीं है सर। और सर आदमी अंदर से इतना पीड़ित है, इसलिए भागता है सब सुख प्राप्त करने के लिए। उसके प्रति सजग रहें। तो इस समय तो सर ये हालत मैं यही कहता हूँ मैंने कि सुख वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। इविंदा साहब जो हमारे साथ गए थे, हम वो भी कहने लगे, बोले यार एक दिन आके यहाँ रहा जाए। मैंने कि यहाँ रहने से क्या मिलेगा आपको भाई, ये तो बताओ, सिवा पैसे खर्च करने के, गंदा खाना खाने के। तो कहने लगे यार तुम्हें दिन क्या हो गया, तुम्हारे हमारी समझ में नहीं आती तुम्हारी कार बनती। सही बात है। अब मैंने कि मुझे नहीं, आप लोग भी अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो धीमे धीमे साहब मुझे तो केवल एक ये लगता है कि यूएचबी के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास पे। ठीक बात। हर एक आदमी केवल एक दूसरे को धोखाधड़ी या जैसा कहें दलाली, इसी में लगे हुए हैं सब। और ये प्रवृत्ति सब इधर चंडीगढ़ के आसपास तो बहुत ही ज्यादा है सब, चंडीगढ़, पंचकुला, एक ट्राई सिटी है सर यहाँ पे। तो यही शेयर करना था सर। क्या हो गया, देखिए सुविधा से सुख पाने का जो पूरा प्रोग्राम है, वो जब तक सुविधा नहीं रहती है तब तक तो फिर भी नियंत्रित रहता है। जब सुविधा बढ़ जाती है तो एक तरह से अनियंत्रित हो जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कि अब क्या करें। सुविधा तो हो गई, भोग भी रहे हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है, तो काफी क्राइसिस की स्थिति में आ जाता है आदमी। मैंने सर एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि जब से मैनेजमेंट थ्योरी हावी हुई है एमबीए वाली, तब से समाज में अराजकता टाइप ज्यादा बढ़ती जा रही है। कंपनीज में भी, विभागों में भी। अभी सरकारी विभाग इसलिए थोड़ा बचे हुए हैं कि वहाँ एमबीए वाले नहीं घुसे हैं सर। उनकी तो पूरी जिंदगी केवल
बॉडी सेंसेशन पर चल रही है सर। वहाँ कंपनी को धोखा देते हैं, कस्टमर को धोखा देते हैं, मालिकों को धोखा देते हैं। बस एक वो है कि बाई दिस वे और दैट वे पैसे खींच रहे, फिर बॉडी सेंसेशन में खर्च करते हैं। और जो सब दूसरे इंजीनियर्स हैं या दूसरे विंग के आदमी हैं। जी सर। सिर्फ मैनेजमेंट की थ्योरी की बात नहीं है, पूरी भौतिकवादी दृष्टि वही है। जी सर। मैनेजमेंट का जो है उसका एक आउटकम है, पर जनरल सिद्धांत वही है। अब तो सब इंजीनियर्स भी ये कहने लगे हैं कि बोले काम करने का फायदा क्या है, ये हमसे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, मजे मार रहे हैं, आराम से रहते हैं, और हम इतनी मेहनत करते हैं, वी आर नोवेयर। जी सर। एक बात नरेश जी, रंगनाथ जी बताइए। रंगनाथ जी। Sir, good morning, sir. Namaste. I am Ranganath, sir. How are you? How are you, sir? I remember we met in Chennai. Thank you, sir. I have so much affection and regard for you, sir, for your nice words, which will console, which will bring comfort for us in these days. I have a question in English, sir. I waited in English period, but now Hindi. Can I put that question in English, sir? Yes. Get ready for third stage of pranayam. In these days of where money is gaining ground, the establishment of relationship depends upon the financial position, status of an individual, sir. Otherwise, the relationship is not strong, and if at all it is established, it is only temporary. That is because they are given much importance for status and financial position and other things, sir. The true relationship still it is waiting, sir. What I observed as an observer, I observed people, they are respecting or they are maintaining relationship with some sort of selfishness motives. Breathe out. 2, 3. I need your enlightenment, sir. 5, 6. Hold. Yeah, this is what is the situation today in the society. 3. Yes, sir. Yes, sir. Society today thinks that physical facility is everything. 4. Yes. Breathe out. And therefore, 3. their education, 5, their work, 6. their relationship, all of them seem to be based around physical facility. Yes. So that is what is happening. 3. But Yes. is it right or is it not right? 3. That is the question that we have to ask ourselves. 2. Breathe Yes. You mean discrimination power? 4. No, what we need is to understand what is the reality and what is our, being in that reality. Yes. So, for example, if you feel related to me, yes, you expressed just now, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is no material transaction between us. Yes, sir. Yes, exactly. But still we can feel relationship. Yes, true. And true, this sir. relationship is going to be deeper than the relationship which will be based on physical facility. Yes, sir. Yes, sir. I understood, sir. Yeah. So it is true that today the whole society is centered around physical facility because it believes that physical facility is all that matters. But the relationship is something much higher than physical facility. And understanding is still much higher than the physical facility and relationship. Yes, so sir. if we understand this and we start working on it, we find that yes, we can relate to the people on the basis of our right understanding. We can relate to the people on the basis of our feeling.
Yes, sir. And Yes. it not necessarily be based on physical facility alone. Yes, sir. Yes. 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 I So we have have to do this really. experiment. Yes, yes, sir. I do it. I'm doing it, sir. Then I enjoyed your definition about compassion and love just now in English. And I remember your words also that you spoke to me in SRM guest house. It takes time. It takes time to establish truth. Yeah, that in spite of sometimes I feel unhappy, though I train their brains, still in a corner of the place and some people the same thing. But I hope I will bring change, sir, to my best, following your guide. Yes, true, true. Yeah. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I am in West Godavari, sir, as co-facilitator, UHV 2. Okay, you were in Tirupati, isn't it? Tirupati, but here, Vasavi Engineering College, Tadepalli Gudam, myself, Nidhi Madam, Yashwant Patil, and Mahesh Mahasna, we were here, sir. Today, 7th day. Acha, 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 acha. Acha, acha. You are there for the workshop. Yes, sir. Yes, sir. We are doing well, sir. Tomorrow, day 8. Very nice. Okay, nice. Sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Rangnathji. Thank you very much. Thank you. Yeah. Yes, अखिलेश्वर जी. प्रणाम सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल. सर, आपसे जो कुछ भी सीखा है उसका बहुत आभार है और आगे और भी कुछ सीखने की इच्छा है. सर, मैं इस कंटेंट से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो इसी सेशन में मैं ठीक से करने की कोशिश कर रहा हूँ. इससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था. अब जो प्रॉब्लम आ रही है सर, वो ये आ रही है कि जब मैं एक्सरसाइज के स्टेप्स को अपने अंदर जब देखने जाता हूं तो मैं स्वकेंद्रित हो जाता हूं, मतलब अपने में ही रह जाता हूं. तो बाहर जो व्यवहार है ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है. तो जैसे मैं एक चीज के बारे में सोच के जब तक उसको रिस्पांस रिएक्शन जो कुछ करने का अभी सोच ही रहा होता हूँ, तब तक दूसरा मुद्दा आ जाता है. फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ. ज्यादातर टाइम मैं क्या शांत रह जाता हूँ व्यवहार में, और बाकी पार्टिसिपेशन में कार्य में तो मैं कर रहा हूँ. जैसे घर में अपने परिवार में जो किचन में हेल्प है या बाकी जो चीजें हैं वो तो मैं पहले के जैसे ठीक से कर रहा हूँ. लेकिन जो परिवार के साथ जो व्यवहार का मुद्दा है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. तो अब परिवार को ये शिकायत भी है कि अब आप जड़वत होते जा रहे हैं, मतलब पहले जितने लाइव थे वैसा नहीं है. अब इस चीज को अभी मैं कैसे हैंडल करूं, ये अभी थोड़ा सा मैं इसमें फंस रहा हूँ. कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करें. देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम बेहोशी में रहकर उल्टा सीधा व्यवहार करें या होश में रहकर सही सही व्यवहार करें. अपना भाव सही रखें, व्यवहार सही रखें. दोनों में से क्या चीज ठीक? ठीक तो सर होश वाला ही है. होश में रहेंगे तो व्यवहार गड़बड़ नहीं होगा. होश में रहेंगे तो भाव भी सही होगा और व्यवहार भी सही होगा. ठीक है कि नहीं? तो अभी क्या हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब आपने होश में रहना शुरू किया है, उसमें भाव तो आपका ठीक हो रहा होगा पहले की तुलना में. जी सर, जी बिल्कुल सर. लेकिन उस भाव के तहत बाहर जो आपको व्यक्त होना है, उसमें भी आपको फ्रेश डिसीजन लेना पड़ रहा है. पहले एक सेट पैटर्न, उसके तहत आप बाहर रिस्पॉन्ड कर जाते थे, रिएक्ट कर जाते थे, है कि नहीं? अभी उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, तो फिर आपको अभी फ्रेश सोचना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है. तो ठीक है, टाइम हड़बड़ी ना किया जाए. एक बार वो डिटेल को आप वर्कआउट कर लेंगे तो आगे फिर बहुत कम समय में आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. जैसे उदाहरण के लिए ना, आप देखिए, जैसे आप सीढ़ी उतरते हैं ना,
तो जब सीढ़ी उतरना शुरू करते हैं तो पहले 1-2 स्टेप में आप जजमेंट करते हैं कि सीढ़ी कितना है ना, स्टेप कितना गहरा है, कितने फोर्स से हमको अपने पाँव को नीचे रखना है, ये सब तय करते हैं। 1-2 सीढ़ी में वो तय हो जाता है, उसके बाद आप उतरते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप ध्यान भी नहीं देते और चलता रहता है मामला। लेकिन अचानक कोई सीढ़ी बहुत ऊंची या नीचे आ जाए और आपको झटका लगता है, फिर आप ध्यान देते हैं, फिर थोड़ा समय लगा के तय करते हैं। तो अभी ये चेंज हो रहा है बेसिकली आपका, कि पहले एक तरह से आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते थे, वो आपके माइंड में सेट पैटर्न हो गया था, इसलिए बहुत टाइम लिए बिना उसको आप निर्णय कर ले जाते थे। अभी वो पैटर्न चेंज हुआ है, अभी होशपूर्वक आप देख रहे हैं, अपने भाव को तय कर रहे हैं। अब उस भाव के तहत कैसे हमको व्यक्त होना है, इसका जो भी प्रोसीजर आपको बनाना है, अपने में तय करना है, उसमें अभी शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार वो हो जाएगा तो पहले से ज्यादा फास्ट आप कर पाएंगे। बट तब तक आपको थोड़ा समय लेना ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि घर वाले अगर ये कहते हैं कि आप पहले से जड़ हो रहे हैं, तो उनसे ये बात समझनी चाहिए कि क्या पहले से हमारा व्यवहार ज्यादा अच्छा हुआ है, रिएक्शन कम हुआ है या नहीं। नहीं, रिएक्शन तो सर कम है, उसको तो वो कहते हैं। और दूसरा है कि मैं जैसे वो कार्य जो घर के अपने हैं उसमें भी मैं लगा रहता हूँ, एक्चुअली उसमें टाइम मिल जाता है। जब आप कुछ घर में जैसे कुछ सहयोग करना चाहते हैं, है ना, कोई फिजिकली करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यवहार वाला मुद्दा है, यानी कि जो बातचीत का जवाब देना है ना, थोड़ा भाव का प्रदर्शन करना है, उसमें लैक हो रहा है। बाकी काम काज में या उस तरह से, या मेरा कोई गुस्सा फट रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। जी, वो तो आप, इसीलिए मैंने बताया कि उसमें थोड़ा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि आप एक नया प्रोसीजर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जी, एक बार आप सेट कर लेंगे फिर आसान हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। तो होश वाले काम को बनाए रखिए, फीलिंग को ठीक रखिए, फिर उसको एक्सप्रेस करने वाला जो प्रोसेस है वो आप धीरे धीरे वर्कआउट कर लेंगे। एक बार वर्कआउट हो जाएगा तो फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं एक्सप्रेस, बहुत कठिनाई नहीं होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, चंद्रशेखर जी बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। Nothing is with me, sir, to express. I'm not practicing properly. I will put everything in practice. Then only I can express. I can open my mouth, sir. Yes, yes. Okay, okay. Yes, I'm Okay, just attending, Chandrasekhar. but I'm not practicing the session, sir, throughout the day for at least 5 to 10 minutes. Hello. Simply I'm attending the session. Yeah, yeah. Very nice. Okay. You are from Nandyal? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Namaste. Thank you, Chandrasekhar ji. Sir, thank you, Yes. sir. Thank you so much. We have Ravikant Gautam and then Meenu Agarwal. प्रणाम भैया, रविकांत गौतम बात कर रहा हूँ। जी बताइए। बस कोई प्रश्न है नहीं भैया, एक्सप्लोरिंग चल रही है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को देखना बन पा रहा है। और एक अलग मतलब अभी पिछले 2 साल से ये अभ्यास और अध्ययन चल रहा है। तो एक तो जैसे पहले का लाइफ और अभी का लाइफ बहुत बदलाव हो गया भैया, मुझ में, परिवार में। और जिस तरह से मैं अपने इवन अपने ऑफिस को, समाज को जैसे देखता हूँ, या फिर जैसे भी पूरा कार्य व्यवहार में भैया बहुत सारी तब्दीली हो रही है, हो गई है बहुत सारी। तो ऐसा कहिए कि बस आपके प्रति और सभी पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैंने ये अपना हैंड प्रेस किया है। और सच में आप लोगों ने जिस तरह से
इन चीजों पे रखा है। दर्शन को जिस तरह से हमारे सामने लाया है, तो बहुत ही मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है भैया। अच्छा लगता है और बड़ा अभिमान होता है कि, और अपने प्रति बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए इस शरीर यात्रा में ये अवसर मिला है इसको जान लेने का, समझ लेने का। तो आप सभी का बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ भैया। और बस हम भी आपके ही साथ में चलेंगे धीरे धीरे, और बिल्कुल टीम के मेंबर भी बने रहेंगे। अभी फिलहाल भैया एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है, अध्ययन और अभ्यास का काम चल रहा है, और बहुत जल्दी ही हम आपके साथ में टीम में शामिल होंगे। जी भैया, थैंक यू। रविकांत जी, आप कहाँ पे रहते हैं गढ़चिरौली में? भैया मैं एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये सेशन 7 चल रहा था तब मैं गढ़चिरौली में था। मैं स्टेट गवर्नमेंट में काम करता हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र में। अभी इस वक्त मैं पुणे में प्लेस्ड हूँ। मैं रहने वाला नागपुर का हूँ। नहीं, मैं रहने वाला नागपुर का हूँ। हाँ, और अभी बस 7 मंथ्स मैं रिटायरमेंट की राह देख रहा हूँ कि मेरा रिटायरमेंट जिम्मेदारी है आपके पास? मैं यहाँ पे आइडियल विलेज स्कीम होती है भैया स्टेट गवर्नमेंट की, आदर्श गांव योजना। आदर्श गांव योजना, अच्छा। हाँ, आपने अन्ना हजारे जी का नाम सुना होगा या फिर पोपटराव पवार जी का नाम सुना होगा? हाँ, मुझे ख्याल में है। जी, हाँ, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में उनके जो गांव है उनके अनुरूप कुछ गांव बनाने के लिए एक स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने। तो उस स्कीम का यहाँ का मैं स्टेट लेवल का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। और मुझे तो जो भी यहाँ के जो सप्तसूत्री जैसे हम लोग बोलते हैं, यानी कुरानबंदी, चराईबंदी, जो भी है, श्रमदान, है ना। तो इन सूत्रों को लेकर वाटरशेड डेवलपमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट, इस पर ये काम पीआईए यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से करना होता है। तो आप अभी भोपाल में, अभी आप पुणे में हैं? हाँ, पुणे में प्लेस हुई है, पर मेरा काम ऑल ओवर महाराष्ट्र टूर का होता है, थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। ठीक है ना, हो सकता है अगर कभी आऊंगा मैं पुणे तो आपको सूचना दे। जी भैया, मैं तो राह ही देख रहा हूँ। पिछले बार यशवंत भैया बोल रहे थे कि कोई वर्कशॉप जुलाई में कभी करने वाले हैं, तो मैं राह ही देख रहा हूँ कि आपसे कब तो मुलाकात होती है। वैसे भैया मैं मंदाना में आ चुका हूँ। उधर मैं सौस्ते में गया था। हाँ, अभिषेक भैया से बाकी लोगों से मुलाकात हो गई है। पिछले साल में जनवरी में आया वहाँ पर। अच्छा। हाँ, मिले। मैं इधर यहाँ पे आया था अपना लखनऊ में। अच्छा। तो फिर मैं उधर कानपुर जो है चला गया, और बस मतलब मुझे मेरी आपसे मिलने की इच्छा थी, पर उसको तो पॉसिबल नहीं थी। पर निश्चित ही मैं आपसे मिलना चाहूंगा। और अभी मैंने साल सत्र अटेंड किया नहीं है, पर मेरी ये थोड़ी सी कुछ व्यस्तताएं हैं जिसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पर निश्चित ही अभी जस्ट अभी फरवरी के मार्च के बाद में मैं पूरा फुल फ्लेज उसमें आ जाऊंगा। अभी भैया मैंने जैसे दर्शन की 12 किताबों का अध्ययन किया है, उसका पठन भी चल रहा है। और योशी ने जो 2-3 किताबें पब्लिश की है उसको भी मैंने पूरा पढ़ लिया है। मतलब एक बार रीडिंग हो गई है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरा उसको समझ लिया है। और सुबह के जो सत्र चलते हैं उसको भी मैं अटेंड कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा टूर्स या फिर कुछ होता है तो उसमें जरा व्यत्यय आ जाता है। और परिवार में भी अभी ये बात चल रही है, मेरे घर के लोग भी इस सेशन को सुनते हैं, या फिर अभी जीवन विद्या के जो शिविर होते हैं उसको भी हम सभी अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब से भी अटेंड कर रहे हैं। और एक अलग ही चीज हो रही है भैया। मतलब अभी मैं आपको अभी शब्द में नहीं कह सकता कि आपका कितना धन्यवाद व्यक्त करूँ सारी टीम का, खास करके बाबा जी का, कि जिन्होंने इस पूरी चीज को यहाँ पे लाया है। जी भैया, मेरे तो ठीक है रविकांत, सभी का बहुत बहुत मिलते हैं। नमस्ते। जी। जी मीनू अग्रवाल जी बताएं। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरे जैसे अभी भैया बोल रहे थे कि दूसरों के प्रति जो संबंध होते हैं उनका भाव जो होता है वो मेरा अनुकूल तो होता है, बट जैसे मैं कहीं जाती हूँ, कोई मीटिंग है या कुछ किसी भी जगह पे, तो मैं उस चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ। ऑब्जर्व करने के साथ साथ क्विकली आंसर नहीं दे पाती हूँ कि मैं पहले उस पर विचार विमर्श करके जो बोलती थी, तो वो अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई हूँ उस पर। तो इसके कारण लोग मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा चुप रहते हैं। दूसरा, साथ में जैसे परिवार में भी व्यवहार तो अच्छा है, लोग ये बोलते हैं मुझको कि आप में काफी चेंज आया है, और जैसे पहले मैं बहुत हाइपर हो जाती थी तो वो अपने आप में बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, और मुझे ऐसे अपने आप में भी चेंज दिखता है। पर जैसे कि हर बात बात पे बोलना,
तो अब मैं थोड़ा सा उन चीजों पे बोलती या रिएक्ट नहीं करती हूँ, तो भी मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो रहे हैं कि हम इतना बोलते नहीं हैं। तो ये क्या सही है कि हम क्या करें इसके लिए? देखिए, ट्रांजिशन पीरियड में ये सब चीजें होंगी जी, क्योंकि लोग एक तरह से आपके रिएक्शन या रिस्पॉन्स से परिचित हैं। जी जी अब उसमें जो बदलाव हुआ है जी ना, वो तो दिख रहा है उनको कि बदलाव बहुत सारा अच्छा ही हुआ है। जी। लेकिन फिर भी होता क्या है, लोग अपने संस्कार के साथ ही देखते हैं। यस। तो उस संस्कार के साथ उनको लगता है कि ये बैठ नहीं रहा है जो पहले आपका व्यवहार था और अभी जो व्यवहार है। तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबिलिटी रहेगी शुरू में, बट धीरे धीरे वो आश्वस्त हो जाएंगे। बट ये ट्रांजिशन पीरियड में तो ये रहेगा कि पहले आपका एक तरह का व्यवहार था, अभी वो बदल रहा है। तो लोग जो इतने खुले हैं वो तो अपना संस्कार को अपडेट कर लेते हैं, बट जो खुले हुए नहीं है उनका अपना पुराना संस्कार के हिसाब से जो व्यवहार आपको करना चाहिए उसकी अपेक्षा रखते हैं। वो आप ना करें तो वो परेशान होते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल भाई। जी, तो थोड़ा समय दीजिए उनको और क्या। जी जी, धन्यवाद। ठीक है मीनू जी, नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया जी, मधु अग्रवाल जी का बताइए। नमस्ते भैया, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। भैया रायपुर का आने का हुआ होता है आपका कभी? अभी फिलहाल तो नहीं है, मैं आया था पिछली बार फरवरी में, अच्छा। जनवरी में आया था। ओ, फिर मिस हो गया। भैया आपकी बार जब भी रायपुर आए आएंगे भैया तो आपको आपको आना बताएंगे। है, हाँ इन्फॉर्म करिएगा। जी, भैया मुझे एक बात पूछनी थी जी, कि हमारे दूर के रिश्ते में एक यंग लड़का है, उसका कैंसर 4 स्टेज का है और उसको मतलब सबको पता है कि वो उसका कम दिन है लाइफ का। वो मेरी कजन सिस्टर के फैमिली में है कोई। तो वो बता रहे थे कि अभी वो बोल रहा है कि मुझको शादी करनी है जी, और कोई भी तो रेडी नहीं होगा ऐसा सब जानने के बाद में। तो मेरे को एक तो ये समझ में है कि क्या इसमें यूएचवी में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि वो जाने के पहले कंफर्टेबल स्टेट में आ सके, तो मैं अपनी सिस्टर को कुछ बोल पाऊं। और दूसरा कि उसको उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है अभी, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था और मेरे को लग रहा था कि कैसे उसकी क्या हेल्प कर सकते, क्या सॉल्यूशन है इसके थ्रू, अपने यूएचवी के थ्रू। जी। और बहुत अभी, हाँ बताइए बताइए आप भी। बताइए नहीं बताइए, पूरी बात अरे कर वो लीजिए। सेकंड, हाँ इससे एकदम अलग ही दूसरा पर्सनल में कुछ पूछ रही थी मैं जी, कि कहीं भी कोई भी बात स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के प्रति जो एक्सेप्टेंस होती है तभी वो बात का कोई इम्पैक्ट है या कोई सुनने पे ध्यान देगा या कहने का कोई वर्थ है। ये चीज मैं फैमिली में ऑब्जर्व कर पाई पुराने अभ्यास के बाद में। फिर अभी जब तक स्वयं के किसी भी ग्रुप में किसी से हम कुछ सुनते हैं तो उसके प्रति एक्सेप्टेंस होती है तभी कुछ सुनाई देता है, और हम किसी से कुछ कहते हैं तो हमारे प्रति एक्सेप्टेंस होती है तभी वहां तक बात पहुंचती है। तो नए सिरे से एक्सेप्टेंस बनाने के लिए क्या व्यवहारिक स्टेप होती है? देखिए, स्टेप तो बहुत सिंपल है कि हमारा उसके साथ भाव संबंध का हो और हमारा व्यवहार सही हो। जी दूसरा भैया। चाहे कैसे भी प्रस्तुत हो, हमारा संबंध का भाव और उस संबंध के भाव के तहत सही व्यवहार, ये दो को हम थोड़े समय तक बनाए रखेंगे तो अगले में वो स्वीकृति बनने लगती है। जी भैया। ठीक है। जब स्वीकृति बन जाती है तो सुनने लगता है। हम्म। हाँ आपका जो ऐसा ही पहला मुझे भी प्रश्न है लग रहा उसके था। संदर्भ में, उसका जो एक हाँ। बहुत जनरल सा उत्तर है वो तो मैंने एडलेट जी के प्रश्न के संदर्भ में दिया था ना, कि उसके साथ एक डायलॉग हो और उसको ये ध्यान में आए कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वस्तु है और ये मैं की जिम्मेदारी है शरीर को स्वस्थ रखना। तो
एक तो ये भी हो सकता है कि उससे निकल आए। किसी का कैंसर है वो तो? वो भैया पूरे डिटेल से मुझे नहीं पता, वो कांटेक्ट में नहीं है मेरे, मैं मतलब दूर के ही रिश्ते में है। लेकिन मेरी जो मामा की लड़की है उसके जेठ जी का लड़का या कुछ ऐसा है, वो बता रहे थे। तो पूरे डिटेल्स मुझे नहीं पता है कि क्या चीज का है, लेकिन वो बोले लाइफ का कम एक टाइम बात, बचा है और वो जिद पे है कि ऐसा हो जाए। तो घर के लोग भी सब सोच रहे हैं कि कैसे करे, कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं, और क्यों करे किसी भी लड़की की लाइफ बर्बाद, तो नहीं करेंगे कोई भी। कि जीने की जिजीविषा बहुत है और भोगने की भी जिजीविषा है, तो और टीनेज बच्चा है तो वो सब देखता है। हम लोग उसको आप एक बार के सारा डिटेल समझ लीजिए। भैया जो आवाज जनरल नहीं आ बात थी रही वो है। तो मैंने बता दी थी। मैं कह रहा था कि इसके संदर्भ में जो जनरल बात थी वो मैंने बता दिया था। हाँ अभी हाँ आ हाँ। रही एड्रेड जी के प्रश्न के संदर्भ में बता दिया था। इस आप इसके बारे और डिटेल से लीजिए, तब फिर बात करेंगे, है ना? अच्छा। और भैया वो ये सब से यूएचवी से आईसीटी से कुछ भी कनेक्ट नहीं है ना, उनकी फैमिली ना वो लड़का, तो वहां एकदम अननोन के पास नहीं कोई नहीं, वो कोई व्हाट्सएप बात का नहीं, वो लिंक? तो आप अच्छा। नहीं, आप एक बार सारा समझ लीजिए क्या है, उसके बाद एक बार बात कर लेते हैं जी हम लोग, है जी ना? भैया। क्या जी किया जा सकता जी भैया, थैंक यू। है। ठीक, ठीक है, नमस्ते 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 भैया। नमस्ते। ठीक है, तो समय हो गया है, प्रश्न भी कोई अब रहा नहीं है, तो हम लोग यहाँ रोक सकते हैं। बताइए जी सर। दीदी जी। जी जी सर, एक क्विक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं? हाँ जी, बताइए। सर अभी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस और ध्यान जा रहा है, तो मुझे ये डिफरेंस समझ आ रहा है कि कि की आवाज चली गई, हमको नहीं आ रही है। मैं अपने आप को जो कैरी सारा डिपेंडेंट आपकी होता है कि आवाज बीच मैं में कट जब गई अपने थी, लोगों के मुझे साथ सुनाई होती नहीं हूँ मैं पड़ी। महसूस करती हूँ, और जब बाहर। आपकी आवाज बीच में जी सर, सुनाई अभी नहीं आ रही पड़ी। है? हाँ अभी आ रही, लेकिन फिर से बताना पड़ेगा आपको। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि अभी जितना ध्यान जा रहा है ना अपनी तरफ, तो मेरी अपनी एक इमेज को मैं कैरी कर रही हूँ ऑल द टाइम, जो मैं जो अपीयर नहीं, फिर चली गई आवाज, जो फिर चली गई आपकी आवाज बीच बीच में। जी सर, ठीक बात है, जब नेक्स्ट टाइम बात होगी ठीक है, मैं नेक्स्ट वापस टाइम बात आती हूँ। करेंगे हम लोग। हाँ ठीक जी सर। ठीक ठीक है, ठीक है। जी, प्रणाम 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 सभी सर। को। जी, सबको प्रणाम प्रणाम। जी, तो सभी साथियों का